we want to simulate this. Okay, theory हमने पढ़ा है. So can you see the screen? PPT. Yes, sir. What is wrote Yes, sir. on the PPT? Flow through pipes. वेरी गुड वेरी गुड. तो हमें आज फ्लो थ्रू पाइप सिमुलेट करना है. ओके मुझे डेरिवेशन नहीं सिखाना है, डेरिवेशन ऑलरेडी तुमने पढ़ाई की है. आज तुम्हें सिर्फ देखना है कि प्रोफाइल कैसे जनरेट होता है सिमुलेशन में. ओके सो दिस इज द थिंग वी हैव डन इन डेरिवेशन. वी हैव टेकन वन क्यूबॉइड, ओके, एंड वी हैव एनालाइज्ड प्रेशर. पी इज प्रेशर एंड टाउ इज शियर. ओके एक बाजू में प्रेशर है, एक बाजू में शियर है. ओके तो हमने पहले शियर स्ट्रेस देखा है, शियर स्ट्रेस का कैसे वेरिएशन है. तो उसके लिए हमने नेट शेयर फोर्स किया. ये टाउ और ये टाउ कैंसिल होता है. यू गॉट दिस डो टाउ बाय डो वाई डो एक्स डो वाई डो जेड. ओके सो नेट प्रेशर फोर्स के लिए तुमने फिर से ये इक्वेशन लिखा है, सिग्मा x इक्वल टू 0, सिग्मा y इक्वल टू 0 एंड यू गेट दिस. सो अगेन लाइक टर्म्स गेट कैंसिल, यू गेट दिस. सो डो टाउ बाय डो वाई डो एक्स डो वाई डो जेड एंड माइनस डो फाई बाय डो एक्स डो वाई डो जेड. So ideally they should be same. Okay, they should balance each other. Okay, so we can write for flow to be steady and uniform, there being no acceleration. F is equal to what? Ma. So acceleration is 0. So F is what? Sigma F is 0. So we can write this and this is equal to 0. So this should be equal to this. Okay, so dou x dou y dou z, dou x dou y dou z is cancel. You get dou tau by dou y is equal to dou pi by dou. So this is the preliminary condition you have studied in FM कि कभी भी पाइप में अगर फ्लो पॉसिबल करना है, फिजिबल करना है, तो shear gradient should be equal to what? Pressure gradient. Okay, shear gradient in y direction should be equal to pressure gradient in x direction. So dou tau by dou y is equal to what? Dou p by dou x. Okay, dou tau by dou y is equal to what? Dou p by dou x. Okay, so pressure gradient in the direction of flow should be always equal to what? So pressure gradient कौन से direction में? X direction में. तो shear gradient should be always in the direction perpendicular to the direction of flow. X के लिए perpendicular direction कौन सा है? Y. Okay, I will draw so that the thing will get more clear. Okay, तो basic condition क्या है? बेसिक कंडीशन ये है कि कोई भी पाइप में अगर फ्लो पॉसिबल करना है, ओके, इफ यू वांट टू मेक द फ्लो फिजिकली पॉसिबल in any pipe, okay, so the flow is taking place in which direction? X direction. What is the perpendicular direction to the flow? Y. Okay, so if you want to check whether the flow is physically possible or not, you just have to check what is dou p, pressure with respect to X, and shear with respect to Y. If both are same, then what? The flow is physically possible. Okay, if both are same, the flow is what? Physically possible. So Hagen-Poiseuille equation, as you correctly said, that we are using Hagen-Poiseuille equation to do the theoretical or analytical analysis of flow through pipe. Okay, so it is based on this assumption, Newton's law of viscosity. Okay, the fluid will follow which law? Newton's law. What is Newton's law of viscosity? Everyone know what is Newton's law of viscosity. Tau is directly proportional to velocity gradient. Okay, this is Newton's law of viscosity, and this proportionality sign is replaced by what? A constant mu du by dy, where this mu is what? Viscosity. Which viscosity it is? This mu is which viscosity? Dynamic viscosity. Dynamic viscosity. Yes. So when we divide it by density, what we will get? Kinematic viscosity. Mu. Okay, so we have kinematic viscosity mu by rho. Okay, so it follow the Newton's law of viscosity, and there is no slip. Okay, this is a very important condition. No slip means particles are freeze when they approaches the wall. Okay, so walls there is no slip condition. Okay, so you have done this derivation also. यही आज हमें सिमुलेट करना है ये फ्लो को. तो यहाँ क्या है? प्रेशर फोर्स. ये P is pressure multiply by area will give you pressure force on in the direction of flow, opposite to the direction of flow. हाँ सर, एक डाउट है याच्यामध्ये सर. हाँ बोला.
Sir, the Newton law of viscosity generally shear strength is directly proportional to shear strength rate हा answer. T आता du by dy ते स्पेशल सर्कमस्टान्सेस वर जिथे फक्त वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन मध्ये कॉन्स्टंट राहून वाय डायरेक्शन मध्ये चेंज होती त्या केसला फक्त इक्वेट होतो ना. जनरल न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटीचा शियर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन रेट आहे एवढाच आहे ना. हो, shear stress is directly proportional to gradient. शियर स्ट्रेन रेट ना सर, कारण की ग्रेडियंट हा करेक्ट 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 ते बरोबर आहे तुमचं, कारण की त्यावेळेस तुम्ही बाउंड्री लेअर शिकत असता. येस ऑर नो? सी दॅट टाइम व्हॉट यू आर स्टडिंग दी बाउंड्री लेअर कन्सेप्ट. ओके, ज्यावेळेस बाउंड्री लेअर कन्सेप्ट आपण शिकतो प्युअर फ्लुइड मेकॅनिक्स, दॅट टाइम आपण ते सगळं शिकतो की वॉटर जर मी फॉल केलं प्लेटवर तर त्याची लेअर कशी बनेल, मग शियर what will be the happening to shear, what will be happening to the strain, what will be happening to the rate of a shear. Okay, so that time you define the proper Newton's law of viscosity. But जर आपल्याला टेक होम करायचंय, ओके, आपल्याला क्वांटिफाय करायचंय, तर आपण हा फॉर्म्युला लिहितो. ओके, हेगन पॉसिबल साठी where tau is directly proportional त्याच्या पण खूप सारे बाउंड्री कंडिशन आहेत ना सर, कारण की शियर स्ट्रेन रेट हा फक्त वेलोसिटी ग्रेडियंट सोबत इक्वेट फक्त एकाच कंडिशनवर होतो की वेलोसिटी फ्लोची वाय डायरेक्शन मध्ये चेंज झाली पाहिजे आणि एक्स डायरेक्शन मध्ये सेम राहिली पाहिजे. ही पुन्हा हा त्यावेळेस आपण असं करतो की फ्लो ह्या डायरेक्शन मध्ये आहे. ओके, आता इथे पण बघा ना, फ्लो ह्या डायरेक्शन मध्ये, मग वेलोसिटी कुठल्या डायरेक्शन मध्ये वाढते हे सगळं आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. ओके, इथे आपण वायच्या ऐवजी, बिकॉज वाय इज व्हॉट, ओके, आपण बघा नंतर आता ह्या फ्लोला, सिलेंड्रिकल फ्लोला आपण हे अप्लाय करायचं, तर आपण इथे वाय नाही लिहू शकत. ओके, आपला वाय काय असणार आहे, आर मायनस आर है ना. या केसमध्ये वाय काय असणार आहे आपला, कॅपिटल आर मायनस स्मॉल आर. मग डी वाय काय असणार आहे आपल्याला, कॅपिटल आर काय कॉन्स्टंट आहे त्याची 0 मायनस डी आर, सो डी वाय आपला काय होणार, मायनस डी आर. ओके, सो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाय डी आर असं लिहावं लागेल. ओके, तर ते चेंज होतं. ओके, बट टायमिंग नाव यू अज्युम. ओके ना, आता वेगवेगळे फॉर्म्युले जर तुम्हाला नॉन न्यूटोनियन फ्लुइड साठी करायचंय तरी तुम्ही करू शकता. वेगवेगळे फॉर्म्युले, ए आणि बी कॉन्स्टंट आहे, एन काहीतरी पॉवर आहे. Okay, so there are various things, okay, in the pipe flow. Okay, so now you assume that tau is what, mu du by dy. Okay, Newton's law of viscosity says that shear is directly proportional to velocity gradient, and this proportionality sign we are replacing it by viscosity. Okay, which is nothing but a dynamic viscosity. Dynamic viscosity, when it is dividing by density, we got a kinematic viscosity. The unit of dynamic viscosity is poise and unit of kinematic viscosity is Stoke. Okay, so both are again the name of the scientist, okay, who have given the contribution in this area. Okay, so if you will see this pipe flow, okay, am I audible? Yes sir. Yes sir. Okay, जर तुम्ही हा पाईप फ्लो बघितला तर here the direction of flow is, okay, so here the pressure force is acting to balance the fluid element. हा element आम्हाला stable ठेवायचा, we have to keep this element, fluid element, stable. Okay, so that opposite pressure force will be what I told you, whenever we forecast the pressure on the opposite direction with respect to the distance, we always write P plus dou P by that distance, dx into area pi r square. Area क्या है, pi r square. So this is the pressure force on left side and this is the pressure force on right side. Okay, this is the shear T into tau 2 pi r into dx. Okay, ha shear है tau into 2 pi r into dx. Okay, this is a shear. Okay, so this is the elementary ring, okay, of radius dr. Okay, so here till here the section 1 the distance is x1. Okay, till here the x2 section the distance is x2. So x1 we have, x2 we have. The difference between x2 and x1 will give you what, L. Okay, so this is the terminology we use for Hagen-Poiseuille equation. Now we will write the balance equation. Okay, balance equation when we will write, okay, shear force is given by this shear into area. Okay, which area, surface area. Okay, so this is a shear force. Pressure force already you have knowing, P plus dou P by dx into pi r square. Okay, so forces acting on the fluid element will be the shear force, pressure force on the right side. So the net force on the cylinder must be 0. Yes or no? Sigma f should be 0 because where our domain is what, inside the tube. Okay, so acceleration is 0. So f is, sigma f is what, sigma f is nothing but
sigma f is nothing but, you know, mass into acceleration. This acceleration is what? Total acceleration. Mass into total acceleration. But this total acceleration, we are taking it as 0. So sigma f is 0. So when we have this as the sigma f, we can equate this equal to 0. Okay, तो ये इक्वेट किया p into pi r square, ये according to the sign convention, ये तीनों forces को 0 से इक्वेट किया ऐड करके. Okay, so like term will get cancelled, we get this. Okay, now again here dx will get cancelled, we get tau. So this equation is important. Tau is what? Pressure gradient in the direction of flow multiplied by r by 2. Okay, so this equation look like what? ये equation कैसे दिख रहा है? Okay, this equation look like what? Can you tell me what is the nature of this equation? कोणी सांगेल नेचर क्या है ये इक्वेशन linear का? variation, sir. Linear, yes. So it is like this: y is equal to mx plus c. M का असतो slope, y and x are the concept. Okay, so same way if you will compare this equation, okay, so tau is what? Tau is the y parameter. Okay, x is what? R by 2 radius, tau is y, and m slope is what? Pressure gradient. Okay, so this equation is linear. So how the in a pipe where the shear is maximum when this value r is capital R. सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है आर की? कैपिटल आर. सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है आर की? 0 सेंटर में. ओके, तो टाउ मिनिमम इज एट वेयर? टाउ एट सेंटर, एंड टाउ इज मैक्सिमम वेयर? एट द सरफेस. ओके, तो ये पाइप है मेरा, दिस इज द आर. ओके, तो टाउ यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कहाँ पे होगा? 0 सेंटर पे होगा. ओके, so if you want to draw the profile, how you will draw? It is 0 here, okay, and maximum here. So the profile is what? Linear. Okay, the profile is what? Linear. Okay, so we can see that profile. Okay, now next is understanding the velocity. Okay, next concept बहुत important है, velocity. Okay, how you have studied the shear distribution, now you are supposed to study velocity distribution. मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ इसके लिए, because you have already done this. हमारा ऑब्जेक्टिव डेरिवेशन करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव सिमुलेशन करना है. ओके, बट सिमुलेशन करने के पहले थोड़ा रिवीजन करना जरूरी है. तो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन पता चला सबको, लीनियर है. ओके, इक्वेशन भी पता चला, टाउ इज इक्वल टू माइनस डो पी बाई डो एक्स आर बाई 2. ओके, शेयर इज मिनिमम एट सेंटर एंड मैक्सिमम एट सरफेस. अभी वेलोसिटी देखना है. वेलोसिटी के लिए ये न्यूटन्स लॉ तुम्हें पता है. ओके, नाउ दिस एंड यू गॉट दिस रिलेशन माइनस डो पी बाई, ये हम लोग इक्वेट करेंगे. ओके, इक्वेट करने के बाद we are more interested in what? Velocity. So we will take velocity term on one side, remaining all terms on another side. तो ये mu इधर नीचे गया. Okay, so now what we will do, we will integrate. ये integrate करेंगे. integrate करने के लिए ये बाहर आ जाएगा. Okay, 1 by 2 mu भी बाहर आ जाएगा. integration of r dr is what? r square by 2. Okay, integration of r dr is what? r square by 2. actually इधर और एक 2 आएगा. Okay, so ये 1 by 2 as it is, और r square by 2 भी आ जाएगा. So it will become, so this term is missing here, plus constant of integration is equal to u. Now you are supposed to get this constant by using the boundary condition. Okay, तो boundary condition मैंने use किया. Okay, wait. Okay, I will derive it. ये slide शायद नहीं है इसमें. So हमारा क्या आया था इक्वेशन? I will write tau is equal to क्या आया था? mu du by dy है ना, और क्या आया था? tau is equal to minus dou p by dou x r by 2 है ना, यही आया था ना, minus dou p by dou x r by 2. yes or no? So हम लोग अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करते हैं तो what we will get? We will get mu du by dy. Can you see what I am writing on the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, we are interested in velocity. तो ये वेलोसिटी हम लोग इधर लेंगे, बाकी सब टर्म यहाँ चला जाएगा. डो पी बाई डो एक्स आर, ओके, डी आर.
ओके, सो ये इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, u होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2u डो p बाई डो x r square by 2 plus c. Okay, so what is u, minus 1 by 4 mu dou p by dou x r square plus c. c निकालना है. ओके, सो एवरीवन नो u वेलोसिटी नो स्लिप कंडीशन हम लोग ने एज्यूम किया है, नो स्लिप कंडीशन एज्यूम किया है डेरिवेशन के पहले. नो स्लिप कंडीशन मतलब क्या है कि वॉल, ओके, जहां पाइप की वॉल है, ये पाइप है ना, या जहां पाइप की वॉल है वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. That is what we say that no slip. Fluid is at rest. Fluid particle is at rest near the surface of the wall. So that is no slip condition. So U कहाँ पे zero है, when R is capital R. Okay. तो U अगर मैं ये condition यहाँ पे डालता हूँ, U is zero when R is capital R. So what I will get, 0 minus 1 by 4 mu dou P by dou X. Cap small r की जगह पे क्या आएगा अभी, capital R plus C. So what is C? 1 by 4 mu dou p by dou x r. ओके, तो ये c की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालनी है मुझे, तो 1 by 2 mu सॉरी 1 by 4 mu dou p by dou x r square plus this value. Okay, so you can take common. Okay, 1 by 4 mu dou p by dou x, what you will have, r square minus r square. Okay, so r square minus r square. So this equation, what is the nature of this equation? Parabolic. Yes. Okay, so how is the velocity distribution? Parabolic in nature. तो आज हमें ये देखना है कि shear का distribution linear होता है और velocity का equation कैसे होता है, parabolic होता है. वो parabolic nature हमें देखना है आज. Okay, simulation में. So I will take you to this screen. So this equation we call it as what? This equation we call it as what? Hagen-Poiseuille equation. अभी सेम shear minimum shear maximum मैंने किया, वैसे वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम. तो वेलोसिटी मिनिमम कहाँ है, सरफेस पे. ये तो मेरा एजम्पशन ही है, u min is at surface. So where will be u max? u max will be at center. तो सेंटर में r क्या होता है, जीरो होता है. तो मेरी वैल्यू क्या होगी u max की, 1 by 4 mu dou p by dou x r square. ओके, सो ऐसे कहना है कि u max by u average. Okay, u max by u average is always twice for a laminar flow. ये रेशियो मिलता है. ओके, अगर तुम u average का वेलो निकालोगे, u average का कंसेप्ट है q is equal to area into u average. ओके, तो अगर ये फॉर्मूला से तुम u average निकालते हो और ये u max के साथ अगर तुम u average डिवाइड करते हो ये दोनों, तो तुम्हारा रेशियो क्या आएगा, 2 रेशियो आएगा. Twice of average velocity is your maximum velocity. For which flow? Laminar flow. Okay, तो आज हमें ये सिमुलेट करके देखना है. So am I clear to you with theory, with equations? Yes, sir. So what is take home? Take home is shear stress is linearly varying. Okay, shear is minimum at center, maximum at surface. Velocity is parabolic in nature. Velocity is maximum at the center and minimum at the surface. तो ये टेक होम है मेरे थियोरी से. अभी मुझे सिमुलेशन के ऊपर जाना है. ओके, सो जस्ट गिव मी अ 2 minutes. I will take you to the software, simulation software. Okay.